Another important type of तफर्रुक़ इत्तिसाल इज़ तफर्रुक़ इत्तिसाल इन अमराज़ मुरक्कबा। हमने अमराज़ मुफ़रदा में तफर्रुक़ इत्तिसाल पढ़ लिया, लेकिन हम जानते हैं कि तफर्रुक़ इत्तिसाल एक ऐसा मर्ज़ है जो सिर्फ़ अमराज़ मुफ़रदा में नहीं होता है, बल्कि आज़ाए मुफ़रदा में नहीं होता है, बल्कि आज़ाए मुरक्कबा में भी होता है। तो वो तफर्रुक़ इत्तिसाल आज़ाए मुरक्कबा में कैसे होगा और तफर्रुक़ इत्तिसाल आज़ाए मुफ़रदा में कैसे होगा, इसके फ़र्क को समझ लीजिए कि जब भी कोई एक उज़्व, एक मुफ़रद उज़्व के अंदर तफर्रुक़ होगा तो हम उसको तफर्रुक़ इत्तिसाल आज़ाए मुफ़रदा का कहेंगे, और जब मुरक्कब आज़ा में कोई तफर्रुक़ इत्तिसाल होगा तो उसको हम तफर्रुक़ इत्तिसाल मुरक्कब उज़्व का कहेंगे। हमने अब तक जो देखा वो सारे आज़ाए मुफ़रदा थे। जैसे हमने देखा कि लहम में तफर्रुक़ इत्तिसाल, जिल्द में तफर्रुक़ इत्तिसाल, बोन्स में या इज़ाम में तफर्रुक़ इत्तिसाल, अभी हम देख रहे थे नर्व्स में तफर्रुक़ इत्तिसाल, ये सारे आज़ाए मुफ़रदा में शुमार होते हैं। अग़शिया में तफर्रुक़ इत्तिसाल, ये भी आज़ाए मुफ़रदा में शुमार होती हैं। अलबत्ता ऐसे आज़ा जो मुरक्कब हैं, उनमें जो तफर्रुक़ इत्तिसाल होगा हम उनको कहते हैं आज़ाए मुरक्कबा का तफर्रुक़ इत्तिसाल। इसकी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो इन्फ़िसाल या खला, किसी जॉइंट का उखड़ जाना या जॉइंट के अंदर तफर्रुक़ का पैदा हो जाना। तो इसमें मुरक्कब उज़्व जॉइंट जो हैं उसके अंदर कई चीज़ें शामिल होती हैं। आप यहाँ पर मिसाल के ज़रिए से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये जॉइंट है, यहाँ पर आप देखिए कि तफर्रुक़ इत्तिसाल है, ये नॉर्मल है और दिस इज़ एबनॉर्मल। यहाँ जो तफर्रुक़ इत्तिसाल आपको नज़र आ रहा है, ये एक तरह से ये जॉइंट पूरी तरह यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, और जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डिसलोकेशन भी हो रहा है, और वो इस तरह से हो रहा है कि जॉइंट में जो कई चीज़ें हैं, जॉइंट जो है वो सिर्फ बोन से बना हुआ नहीं होता है, जॉइंट में बोन्स भी होती हैं, पहले शायद हमने इसको डिस्कस किया है, और कार्टिलेजेस भी होते हैं, और इसी तरह लिगामेंट्स भी होते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें कुछ मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, ठीक है, अक्षिया भी होती हैं। तो किसी मुरक्कब उज़्व में इस तरह तफर्रुक़ इत्तिसाल हो जाए कि उसका एक जुज़ दूसरे उज़्व से जुदा हो जाए, दूसरे जुज़्व से जुदा हो जाए। एक जुज़ आप ये देख सकते हैं कि ये एक जुज़ है और ये दूसरा जुज़ है, ठीक है। यहाँ दोनों इंटैक्ट थे, दोनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो थाई का एरिया है वो अलग हो रहा है और नीचे का जो काफ का एरिया है ये अलग हो रहा है। तो इस तरह के तफर्रुक़ इत्तिसाल को हम आज़ाए मुरक्कबा का तफर्रुक़ इत्तिसाल कहते हैं, और इसे इन्फ़िसाल या खला कहते हैं, उखड़ जाना या अलग हो जाना। जॉइंट्स का मफासिल का इन्फ़िसाल का मतलब होता है अलग होना, या खला यानी उखड़ जाना। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसके आज़ाए मुफ़रदा में तफर्रुक़ वाक़ हो ना, ये हो सकता है कि आज़ाए मुफ़रदा में भी तफर्रुक़ इत्तिसाल हो जाता हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आज़ाए मुफ़रदा में भी तफर्रुक़ इत्तिसाल हो, ठीक है। आज़ाए मुफ़रदा का जो तफर्रुक़ इत्तिसाल होगा वो आज़ाए मुफ़रदा का तफर्रुक़ इत्तिसाल में शुमार होगा, और जब मुरक्कब उज़्व पूरा ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अलहदगी हो रही है तो उसको हम अमराज़ आज़ाए मुरक्कबा का तफर्रुक़ इत्तिसाल कहते हैं। सो समटाइम्स तफर्रुक़ इत्तिसाल हैपन्स इन आज़ाए मुरक्कबा और कंपाउंड ऑर्गन्स। हाउ दिस तफर्रुक़ इत्तिसाल हैपन्स? सो तफर्रुक़ इत्तिसाल हैपन्स in such a way that discontinuity in compound organs are discontinued without discontinuity of mufrad aza. Simple organs are not discontinued, but compound organs murakkab aza are discontinued from each other
from its parts are discontinued without discontinuation or without tafarruq in the mufrad adha. So here it is mentioned without that of mufrad adha, but in many situations it happens that even mufrad adha, tafarruq in mufrad adha may occur, but that tafarruq in mufrad adha will be included and will be counted among tafarruq ittisal of simple organs, and tafarruq ittisal of compound organs are only that where this is a joint is a kind of compound organ, where not only bones, it is made up of many mufrad organs. That's why it is called as compound organ. It is made up of bone, cartilage and membrane and ligament. So because of composition of so many mufrad organs, this joint will be called as murakkab organ, and if one part of this joint is discontinued from the other part, like dislocation, or we can call as uh, displacement, then such type of discontinuity will be included, will be counted in तफर्रुक़ इत्तिसाल ऑफ कंपाउंड ऑर्गन्स. यहाँ कुछ बातें और काबिल गौर हैं. हमने तफर्रुक़ इत्तिसाल की मुख्तलिफ़ किस्में देखी हैं. अब तफर्रुक़ इत्तिसाल के मुतालिक कुछ उसूली बातें हम यहाँ पर गौर करेंगे, इस पर बात की जाएगी. तफर्रुक़ इत्तिसाल का असर मुख्तलिफ़ आज़ा में मुख्तलिफ़ होता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर तफर्रुक़ इत्तिसाल उरूक़ में है तो उसका असर मुख्तलिफ़ होगा. तफर्रुक़ इत्तिसाल जिल्द में है तो उसका असर मुख्तलिफ़ होगा. और तफर्रुक़ इत्तिसाल अगर बोन्स में है तो उसका असर मुख्तलिफ़ होगा. तो गोया कि तफर्रुक़ इत्तिसाल हर उज़्व का एक जैसा नहीं होता और मुख्तलिफ़ आज़ा में उसका असर मुख्तलिफ़ तौर पर होता है. उसके असबाब मुख्तलिफ़ होते हैं, उसके असरात मुख्तलिफ़ होते हैं, उसकी अलामतें मुख्तलिफ़ होती हैं. यहाँ चंद मिसालें दी गई हैं कि अगर कल्ब में तफर्रुक़ इत्तिसाल वाक़ हो जाए तो इससे मौत वाक़ हो जाती है. कल्ब का तफर्रुक़ इत्तिसाल क्या होगा? अगर कल्ब में किसी तरह का रप्चर हो जाए, कल्ब में लिगामेंट्स भी हैं और मसल्स भी हैं, उनमें किसी तरह का रप्चर हो जाए तो वो रप्चर अनबियरेबल होता है. वो उसको हम किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो कल्ब का तफर्रुक़ इत्तिसाल बहुत ही शदीद होता है, बहुत ही नाजुक होता है. इसका असर इंसान की ज़िंदगी पर ऐसा पड़ता है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है. और दूसरे तफर्रुक़ इत्तिसाल से ये बात नहीं होती. दूसरी बात यह है कि बेहतर मिजाज वाले उज़्व में तफर्रुक़ इत्तिसाल हो तो जल्द ठीक हो सकता है, बख़िलाफ़ रद्दी मिजाज वाले उज़्व के. तो बेहतर मिजाज वाले उज़्व में तफर्रुक़ इत्तिसाल का क्या मतलब होता है और रद्दी उज़्व वाले मिजाज वाले तफर्रुक़ इत्तिसाल का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये समझिए कि वो उज़्व जिसका मिजाज हार रतब है या हार रतब मिजाज इंसानों के लिए बेहतर माना जाता है, इसलिए कि ज़िंदगी का मिजाज ही हार रतब है. तो हार रतब होने से क्या फ़ायदा है? मिसाल के तौर पर अगर स्किन में तफर्रुक़ इत्तिसाल होता है, स्किन का मिजाज या गोश्त में तफर्रुक़ इत्तिसाल होता है तो उसका ठीक होना आसान होता है, इसलिए कि वहाँ पर खून की सप्लाई अच्छी है और वहाँ पर हीलिंग अच्छी होती है, उसका मिजाज अच्छा है, हारत है, तो ये जल्दी ठीक हो जाता है. और रद्दी उज़्व वाले जो मिजाज होते हैं, रद्दी मिजाज वाले जो उज़्व होते हैं, जिसका मिजाज मिसाल के तौर पर बारिद है या याबिस है, तो या फिर उनका मिजाज जो है वो निस्बतन ख़राब है, अच्छे मिजाज में शामिल नहीं है. तो जैसे सौदावी मिजाज के जो आज़ा होते हैं, गुदूद हैं या और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनका तफर्रुक़ इत्तिसाल जो है वो उसके ठीक होने में वक्त लगता है. तो आप जानते हैं कि बोन्स का मिजाज बारिद याबिस है, उनका तफर्रुक़ इत्तिसाल ठीक होने में वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लग जाता है, महीने लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, जैसा तफर्रुक़ हो उस एतबार से. जबकि
گوشت کا تفرق اتصال بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا وہ کتنا ایکسٹینسیو ہے، کتنا زیادہ ہے، کتنا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اسی طرح تفرق اتصال پر مختلف موسموں کا اثر مختلف ہوتا ہے، جیسے قروح صیف ہے نا۔ قروح صیف کا کیا مطلب؟ جب گرمی کے موسم میں، صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں جو زخم پڑ جاتے ہیں تو ان کا ٹھیک ہونا نسبتاً ٹائم لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے یہ کہا کہ حارت مزاج والے اعضاء کے اندر تفرق اتصال جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں تفرق اتصال اگر ہو جائے تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حارت مزاج والے اعضاء میں خون کا سپلائی اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہیلنگ کے جو کام ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں، طبیعت اس کو جلدی ٹھیک کر لیتی ہے۔ اس طرح جلد کا مزاج معتدل کے قریب ہوتا ہے تو اس کا بھی تفرق اتصال جلدی ہو جاتا ہے۔ البتہ گرمی ایک ایسی چیز ہے، باہر یا موسم کی گرمی کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ موسم کی گرمی ہیلنگ کو ڈیلے کرتی ہے، اندمال کے اندر یہ تاخیر کرتی ہے اور اس کو جلد ہیل نہیں ہونے دیتی۔ اس میں ایسے موسموں میں اس بات کا چانس ہوتا ہے کہ عفونت لاحق ہو جائے۔ اور عفونت لاحق کیسے ہوتی ہے کہ جو جراثیم ہیں ان کی گروتھ بھی گرمی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے، اور جب کوئی تفرق کہیں پر ہوا ہے تو کٹ سرفیسز پر بیکٹیریا یا جراثیم آسانی سے گرو ہو سکتے ہیں، ان کو غذا ملنے لگتی ہے تو وہ ان کی گروتھ وہاں فاسٹ ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ افزائش ہوتی ہے۔ اس لیے گرمی کے موسم میں جو قروح ہوتے ہیں وہ ایک تو عفونت کے چانسز کی وجہ سے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ گرمی زخم کے اندمال میں نقصان پہنچاتی ہے اور تاخیر کرتی ہے، تفرق اتصال مشکل ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو اصول علاج ہے تفرق اتصال کے دور کرنے کا یا کسی بھی زخم یا جراحت کے دور کرنے کا، وہ ہے تجفیف۔ اس اصول سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ تجفیف جس بھی دوا میں ہوتی ہے یا جس تدبیر میں ہوتی ہے، یعنی خشکی جہاں پر بھی پائی جائے گی، خشکی جب ہم خشکی پیدا کریں گے تو خشکی پیدا کرنے کی وجہ سے وہاں پر زخم جلدی بھر جاتے ہیں، وہاں پر پھر رطوبتیں نہیں بہتیں، رطوبتیں جو تعفن کی ذمہ دار ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی اور جلد خشک ہو جاتے، جلد جو ہے زخم خشک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی دوائیں ہیں جو اندمال قروح کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مدمل قروح ہوتی ہیں، جیسے مرمکی ہے اور جو اس طرح کی دوائیں آتی ہیں جو زخم کو مندمل کرنے والی ہیں، عشق ہے، تو ان ساری دواؤں کا فعل ہے، پھٹکری ہے، یہ مجفف ہوتی ہیں۔ تو مجفف ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال زخموں میں کیا جاتا ہے، اور قروح صیف میں مجفف کے ساتھ ساتھ یہ دوائیں بارد بھی ہوتی ہیں، حابس ہوتی ہیں، حابس دم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ جلد خشک کر دیتی ہیں۔ البتہ جو سردی کا موسم ہے وہ قروح کے اندمال کے لیے یا تفرق اتصال کے اندمال کے لیے بہت فیوریبل ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں گھر کے، آپ ان سے سنیں گے، یا عام طور سے یہ ان علاقوں میں جہاں موسم ٹھنڈا اور گرم دونوں موسم ٹھیک ٹھاک، ٹھنڈی بھی پڑتی ہو گرمی بھی پڑتی ہو، اور کوئی آپریشن وہاں پر کرنا ہو، کسی قسم کی سرجری کرنی ہو، پلانڈ آپریشن ہو یا پلانڈ سرجری ہو، سرجیکل انٹرونشن ہو، تو اس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ سردی کے موسم میں کرائیں تو اس سے جو ہے جلد ہیلنگ ہو جائے گی، اور گرمی کے موسم میں اوائڈ کیا جاتا ہے کہ ابھی ہیلنگ ہونا مشکل ہے۔
تفرق اتصال may have different effect on different organs. تفرق اتصال of bone is different. تفرق اتصال of jild is not so much painful. تفرق اتصال of arteries are very dangerous. So effect of تفرق اتصال on different organs is different. It depends on which organ is being involved, such as تفرق اتصال of heart. Heart is having ligaments and muscles in it, composed of ligaments and muscles and membranes. So if تفرق اتصال happens in the heart, the cardiac cycle stops and the blood pumping of blood to the whole organs it stops, and this leads to sudden death. So تفرق اتصال of heart is very dangerous, while that of other organs is not so much dangerous. So it is very important to note which organ is involved in the تفرق اتصال. Another important point is organs with better mizaj favor better prognosis. If organ is having for example Hararat mizaj, which is close to the mizaj of blood, then such organs are heal in a better way. Organs with better blood supply, they heal better, but organs with poor blood supply or organs with mizaj opposite to the mizaj of blood, they heal slowly. So for example muscles, they are having rich blood supply, they heal very fast, while bones, fracture of bones or تفرق اتصال of bone, it takes much time, even weeks to months. So it depends on the mizaj. So here you can see how mizaj is integrated with تفرق اتصال. So mizaj is not only mizaj is a different category, so mizaj is a different category of disorder, but even the concept of mizaj is related and integrated in every aspect of diseases and at everywhere almost, not only in disease but also on the normal human being, normal functioning, even the mizaj of medicine, the mizaj of therapies, and mizaj of seasons, mizaj of geographical climate, and mizaj of timings, even day and night is having different mizaj. So it is very interesting concept. So if organs having better mizaj, then the prognosis is better, and if organ is having a poor mizaj, poor means away from the mizaj of blood, then the diagnosis is poor, the prognosis is poor. So better mizaj, har rat mizaj is considered as better. Har rat mizaj, because it is a mizaj of blood, khun, or it is also a mizaj of ruh, and it is also a mizaj of life. Even the mizaj of life is harat. We need two things for our life, for continuation of our life, as discussed earlier. One is hararate garizia and the other thing is rutubate garizia. So we need hararat garizia and rutubat garizia. So the mizaj, the organs having such mizaj are considered to be having a better prognosis. Even the skin is having a better mizaj, the normally the skin healing occurs very fast. Then تفرق اتصال is linked with the mizaj of seasons, and different seasons are having different mizaj, as I think we had discussed it somewhere. Seasons means there are certain seasons. One is summer,
other thing is winter, spring. These are 4 categories, and autumn. So in all these categories, in all these types of seasons, all are having different mizaj. For example, summer is having har yabis mizaj, winter is having barid and ratva mizaj, spring is having har and ratva mizaj, or some say it as a mutadil, and autumn is having barid and yabis mizaj. So it depends on different seasons, because of different mizaj of different seasons, tafarruq ittisal heals accordingly. So which season is favorable to tafarruq ittisal? So we call winter season is more favorable to for the healing of uh, tafarruq ittisal. Winter season and even autumn season may be called as better season. But why it is better? It is better because of its burudat, no, not because of rutubat. Thus, the time, the duration where the burudat is more, the extent of healing and the amount of healing will be more. The tafarruq ittisal will heal faster. So that is the reason people where both winter and summer occur at a considerable magnitude. Then in such situations, the doctors and physicians recommend for selected and planned surgeries and elective surgeries to be done better in a winter season, because in winter season the healing occurs fast. And the same reason is that when we use the drugs and tadabir for healing drugs, so such drugs are also having barid mizaj, barid and mostly yabis mizaj. So seasons with such mizaj, either the duration of winter or the duration of autumn with barid and yabis predominance, will be better for the healing. And it is another discussion, another topic, which duration of which season is of which mizaj, it is mentioned in general. So barid and yabis mizaj season are better for healing of tafarruq ittisal. So mostly healing drugs, for example murmakki or ushk or alam, such drugs are usually having barid and yabis mizaj, and they are called as mujaffif. Why mujaffif? Because they are having desiccating property, they induce dryness, and they approximate the both the cut edges. So these drugs are responsible for dryness of any kind of extra fluid in the tafarruq ittisal region, and they are also responsible for they are also responsible for stopping the ta'affun, the ufunat or infection. They are against the infective environment. They are working against effective environment. So mostly the drug which is having mujaffif effect, thus such drug is also having antimicrobial effect, antimicrobial. So because of such effects, these drugs are used for healing of tafarruq ittisal.
And why rutubat, sometimes some tafarruq ittisal are called as difficult to heal. One example is kuruhe saif. Kuruhe saif are those wounds or those tafarruq ittisal of flesh which occur during summer season. So because of hard temperament of summer season, the hararat is favorable to the infection and bacterial growth. So such conditions where either hararat is increase in the climate, in the air, external air, or rutubat is also associated with that, then in such situations wounds usually do not heal in a better way. So in such scenarios and in such situations, usually uh, we have to aggressively treat the patient on the line of treatment of tajfif and indimal quru with the use of barid and yabis drugs. And the reason for poor prognosis of Kuru Hesef is the same as discussed, Hararat and Rutubat. Hararat is usually more dangerous and more harmful for such conditions in comparison to this Rutubat. But if both Hararat and Rutubat combine, it increases the humidity of the climate, and this humidity with hot climate is very uncomfortable for the patients with tafarruq ittisal. So these are brief discussions about tafarruq ittisal. We have discussed different types of tafarruq ittisal. We have seen the tafarruq ittisal of uzve mufrad, such as tafarruq ittisal of jild, tafarruq ittisal of lahm, tafarruq ittisal of bones, tafarruq ittisal of cartilages, and you can recall all the tafarruq ittisal, even tafarruq ittisal of axia and membrane. We had discussed tafarruq ittisal which involves the muscles, and tafarruq ittisal which affect the uruq or blood vessels. Similarly, we have discussed tafarruq ittisal of nerves, and lastly we discussed tafarruq ittisal which causes compound organs to be discontinued or dislocated. And tafarruq ittisal not only occurs in compound organs like joints, it may affect vital organs like tafarruq ittisal of heart. So such type of tafarruq ittisal which affects vital organs, as we discussed, is having very poor prognosis, and it is very difficult to treat, and we could not do any measure in such scenario. Similarly, tafarruq ittisal of uruq in of uruq blood uruq, or especially the arteries, aneurysm is very critical situation, and if rupture of the aneurysm happens, we could not treat that conditions easily, and it is very difficult to handle such situations. So among sui mizaj, sui tarkib and tafarruq ittisal, all types are briefly discussed. The examples are also, we have seen many examples, and we have seen the need of classification also, why it is classified, and we have seen even certain other links of tafarruq ittisal with mizaj, and the link of tafarruq ittisal with seasons. Similarly, the seasons are broader concepts. These are included in
asbab sitta daruriya, where hawa is a very important sabab for continuation of life, continuation of health in of human body. So seasons affect, different seasons have different effect on the human body. So different types of sui mizaj, different types of sui tarkib and tafarruq ittisal may occur in different climate, different seasons, such as in summer the sui mizaj har is more prevalent, and in winter sui mizaj barid is prevalent. So the climate not only, season not only affect the tafarruq ittisal only, it may affect sui mizaj, and large effect of climate is, large effect of season is on the first category of amraz mufrada, that is sui mizaj. So according to different four kafiyat, sui mizaj of different types may occur in different seasons, and we have seen earlier some diseases are more prevalent in certain areas which are called as amraz jinsiya, in different genes of geographical genes or geographical regions. So such differences, such more prevalence and epidemiological data is because of the season, which affect particular mizaj of individuals, and which particular mizaj disease increases in certain situations. So regions with cold climate, if a region with cold climate even the season is cold, then cold diseases are more prevalent and cold diseases develop more in that condition. So these all concepts are interlinked, and while diagnosis of disease we have to consider all the predisposing conditions, environmental conditions, and the nature of disease and the mizaj of individual. All these things must be considered for better diagnosis and better treatment, because the treatment is not only because of only diagnosis of disease. If we diagnose a case of sui mizaj har or sui mizaj har of meda, the mizaj of stomach is har, so we should not give him only barid mizaj of stomach, but we have to consider what the extent of hararas is there, and what is the mizaj of that particular person, and what is the mizaj of that particular environment, and what is the mizaj of that particular disease, how much it is hot and how much it is har. So accordingly the dose is fixed. Not only the drugs is selected based on the mizaj, but also the dose of the drug is also fixed accordingly. 3 gram may be sufficient for a mild har, sui mizaj har, but for moderate har, for even 5 gram may be advised. And if a patient is of cold mizaj, and then we might consider the adjustment of dose, and even if the climate is also cold at that time, then we have to increase the dose of that particular drug. So to consider the just to consider to diagnose the case is not enough. All these things, all these variables must be considered for diagnosis as well as for treatment. So thank you for understanding the concept of tafarruq ittisal and amraz mufrada.